हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो 2025 की रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, उसके लिए टॉपिक 15 कवर कर रहे हैं जो है डिजाइन ऑफ गियर। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ गियर के अपन यहाँ पे 25 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ये टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी और इसमें अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सभी टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। ठीक है, वैसे देखिए मैकेनिकल के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डिजाइन ऑफ गियर्स के 25 एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है, विच मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गियर। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ब्रोंज, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड स्टील। Steel is preferred for its strength and durability. Next, second, what is the undercutting in gear teeth? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट excessive tooth thickness, second weakening of base of gear teeth due to machining too few teeth, and third increasing the number of teeth, and fourth gear teeth wear. तो करेक्ट आंसर है सेकंड weakening of base of gear teeth due to machining too few teeth because of undercutting reduce gear strength and is avoided in design. Next, third, the pressure angle is a standard proportion gear is normal. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट 14.5 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 25 डिग्री। स्टैंडर्ड गियर ऑफन यूज 20 डिग्री टू और 25 pressures along angle for smooth meshing. नेक्स्ट फोर्थ, द पिच डायमीटर ऑफ गियर इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डायमीटर ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कल, सेकंड डायमीटर ऑफ द रूट सर्कल, थर्ड डायमीटर ऑफ पिच सर्कल यूज्ड फॉर गियर कैलकुलेशंस, एंड फोर्थ डायमीटर ऑफ द बेस सर्कल। तो करेक्ट आंसर है थर्ड डायमीटर ऑफ पिच सर्कल यूज्ड फॉर गियर कैलकुलेशन, बिकॉज पिच डायमीटर डिफाइन द साइज एंड स्पीड रेशियो ऑफ गियर। नेक्स्ट फिफ्थ, विच प्रोसेस इज यूज टू इम्प्रूव गियर सरफेस हार्डनेस। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एनेलिंग, सेकंड कार्बेजिंग, टेम्परिंग एंड क्वेंचिंग ओनली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड कार्बेजिंग। ठीक है, कार्बराइजिंग बिकॉज हार्डन द गियर सरफेस वाइल कीपिंग द कोर थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ, फेस विड्थ इन गियर डिजाइन इन्फ्लुएंसेस। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी, सेकंड स्पीड ऑफ गियर, थर्ड गियर मटेरियल, एंड फोर्थ पिच डायमीटर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज वाइडर फेस विड्थ अलाउज हायर लोड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट सेवंथ, गियर मेश विद द इनवॉल्यूट प्रोफाइल इंश्योर। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वेरिएबल स्पीड रेशियो, सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, थर्ड कॉम्प्लेक्स मोशन, एंड फोर्थ हाई नॉइस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, बिकॉज इनवॉल्यूट शेप डिलीवर स्मूथ एंड कांस्टेंट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट एट, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ गियर रिलेट्स टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लोड ट्रांसमिटेड ओनली, सेकंड शेप एंड साइज फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, थर्ड गियर रेशियो ओनली, एंड फोर्थ नंबर ऑफ टीथ ओनली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड शेप एंड साइज फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, बिकॉज इट्स स्पेसिफिक स्पीड हेल्प टू सिलेक्ट द गियर टाइप। नेक्स्ट नाइन्थ, गियर टूथ फेल्यूर मोड इंक्लूड्स। देखो ऑप्शन है फर्स्ट बेंडिंग फैटिग एंड सरफेस वेयर, सेकंड टॉर्जन फेल्यूर ओनली, थर्ड कॉम्प्रेशन फेल्यूर ओनली, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट बेंडिंग फैटिग एंड सरफेस वेयर, बिकॉज टीथ ब्रेक अंडर रिपीटेड बेंडिंग और वेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। Next, 10th, which type of gear is used when shaft intersect at right angle? तो देखो ऑप्शन है सर्प गियर, बेवल गियर, वॉर्म गियर, एंड हेलिकल गियर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बेवल गियर, बिकॉज बेवल गियर ट्रांसमिट पावर बिटवीन intersecting axis. नेक्स्ट 11, द गियर रेशियो ऑफ अ सिंपल गियर ट्रेन इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डिलीवरी गियर टीथ ओवर ड्राइवन गियर टीथ, second ratio of driven gear teeth to driver gear teeth, third sum of gear teeth, and fourth difference of gear teeth. तो करेक्ट आंसर है सेकंड रेशियो ऑफ driven gear teeth to driver gear teeth, because it determines speed reduction or increase.
Next, 12th, a warm gear is advantageous because, so the option A first, it can produce higher reduction ratio in small space. Second, it is efficient at high speed. Third, it transmit power between parallel shaft only. And fourth, it eliminates sliding friction. So correct answer is first, it can produce high reduction ratio in small space because warm gears are used for large speed reduction. Next, 13. Which gear type has a teeth cut at angle to the axis? So the option A, spur gear, helical, bevel, and rack and pinion. So correct answer is second, helical gear because it gear produce quicker and smoother motion. Next, 14. Backlash in gear refers to. So the option A, overlapping motion, clearance between mating gear teeth, third, gear tooth wear, and fourth, tooth profile modification. So correct answer is second, clearance between mating gear teeth because necessary for lubrication and thermal expansion. वैसे देखिए जनरल नॉलेज के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें टॉपिक वाइज थ्योरी भी दी है, वन लाइनर्स है, अपडेटेड है 2025 का। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्रिटिकल स्पीड इन गियर डिजाइन इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, स्पीड एट विच गियर टीथ ब्रेक, सेकंड, स्पीड कॉजिंग रिजनेंस एंड वाइब्रेशन, थर्ड, rated operational speed, and fourth, speed with zero noise. So correct answer is second, speed causing resonance and vibration because critical speed cause mechanical failure. Next, 16, the likely cause gear noise is। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, lubrication type, second, gears tooth misalignment and interference, third, number of teeth, and fourth, surface finish only। तो correct answer is second, gear smooth misalignment and interference because it affect the smooth engagement of teeth। Next, 17, gear tooth addendum is। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, height of tooth above pitch circle, second, depth below the pitch circle, third, width of tooth and thickness of tooth। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, height of tooth above pitch circle because it define clearance and meshing। नेक्स्ट, 18, the strength of gear teeth is influenced by। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, material and heat treatment, second, speed only, third, gear size only, and fourth, color। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, material and heat treatment because it improve wear resistance and durability। नेक्स्ट, 19, the Lewis formula is used to। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस इन गियर टीथ, सेकंड, मेजर गियर डायमेंशन, थर्ड, डिटरमाइन गियर नॉइज, एंड फोर, डिजाइन गियर शाफ्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस इन गियर टीथ बिकॉज अ क्लासिकल मेथड ऑफ स्ट्रेस एस्टिमेशन। नेक्स्ट, 20, गियर टीथ आर टिपिकली केस hardened to। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इंक्रीज कोर स्ट्रेंथ, second, increase surface hardness and wear resistance, third, improve elasticity, and fourth, reduce manufacturing time। तो correct answer is second, increase surface hardness and wear resistance because surface hardness prevent pitching and tooth wear। नेक्स्ट, 21, which of the following is not a gear measuring parameter। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, पिच, प्रेशर एंगल, मॉड्यूल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर नॉट अ gear पैरामीटर। नेक्स्ट, 22, gear tooth profile modification like crowning helps in। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, reducing noise and stress concentration, second, increasing gear size, थर्ड, स्पीड इंक्रीज, एंड फोर्थ, कलर यूनिफॉर्मिटी। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, रिड्यूसिंग नॉइज एंड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज इट इंप्रूव गियर मेश क्वालिटी। नेक्स्ट, 23, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू गियर डिपेंड्स ऑन। तो देखो ऑप्शन है सम ऑफ पिच रेडी, सेकंड, डिफरेंस ऑफ पिच रेडी, थर्ड, सम ऑफ एडेंडम, एंड फोर्थ, गियर थिकनेस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सम ऑफ पिच रेडी बिकॉज इट एंश्योर करेक्ट मेटिंग and gear meshing। नेक्स्ट, 24, gear tooth fillet radius affects। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड फैटिग लाइफ, सेकंड, gear rotation speed only,
थर्ड gear width, and fourth material type. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट load carrying capacity and fatigue life, because larger fillet radius reduce stress concentration. Next 25, gear backlash can be controlled by. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट adjusting center distance, second changing gear material, थर्ड इंक्रीजिंग रोटेशनल स्पीड, एंड फोर्थ चेंजिंग लुब्रिकेंट. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एडजस्टिंग सेंटर डिस्टेंस, बिकॉज प्रॉपर असेंबली लिमिट बैकलैश एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस. वैसे देखिए जनरल नॉलेज, मैकेनिकल, कंप्यूटर अवेयरनेस सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.